is week number 2, ladies and gentlemen, and we are back with some amazing FIFA action. You guys are watching the eISL Season 2 brought to you by Nordwind Gaming. My name is Fixes. I'll be your host and also your caster along with TTR, who's had a really exciting week number 1. And TT, what are you looking for in week number 2? आई थिंक वीक नंबर 2 के ऊपर बहुत कुछ चेंज करना होगा टीम जो जो इन टीम्स के लिए उतना कुछ खास नहीं गया था वीक नंबर 1 सो उनको आज कोशिश करने या फिर इस वीक पे कोशिश करना है कि वो एक कमबैक करे एटलीस्ट वो एक मैच जीते क्योंकि वो अगर मैचेस शुरुआती में नहीं जीतेंगे आई थिंक चेन्नई एफसी की अगर बात किया जाए जिनका शायद आज मैच नहीं है लेकिन उनका जो शुरुआत है वो सिर्फ 2 ड्रॉ के साथ हुआ है तो ओवरऑल पे मुझे लगता है कि ये बाद में जाके जब होगा ओवरऑल पॉइंट्स के ऊपर हम लोग देखेंगे तो ये बाद में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं तो इसी वजह से कोशिश करना चाहिए जितने भी टीम्स या तो सिर्फ ड्रॉ किए या फिर वो हार गए हैं सो उनको कमबैक करना होगा जितना जल्दी कमबैक करेंगे उतना ही बेहतर And I think 1 week of time is time enough for all the teams to just ponder over the mistakes that they made and try and rectify that. But for all the new viewers out here, let's take a quick look once again at the format and see how this time the season 2 is going to pan out. We are going through our league stages, ladies and gentlemen. That is from 28th February. It had already begun and now we've made it to 11th March. So till 26th April, we're going to have 55 matches and every match has 3 games each, and then we have the playoffs, where we have 6 clubs qualifying. So that is something really interesting. And then what we have is the play-in seats for FGS. That is again another interesting story. But what's on the line? Let's take a look at the prize pool, ladies and gentlemen. And there you have it. The first position receiving 4,50,000 rupees, and so on. एंड सेकंड पोजीशन की अगर बात किया जाए तो उधर मिलने वाला है 2 लाख इंडियन रुपीस थर्ड प्लेस को मिलने वाला है 75,000 एंड फोर्थ को भी 75,000 रुपीस मिलेगा एज अ प्राइस बट ओवरऑल अगर बात किया जाए ये प्राइस पूल तो रहेगा ही ये प्राइस रहेगा लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो है eISL सीजन 2 के विनर टाइटल एंड उसी के साथ जो वो प्लेन्स के स्लॉट है वो क्योंकि उधर जाके आप अपने क्लब को एंड अपने नेशन को पूरे वर्ल्ड के सामने आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं एंड वो एक बहुत ही बड़ी प्राउड की बात है Yeah, indeed, it's a proud moment. But let's take a quick look at the leaderboard as we head into week number 2, and let's see where we stand over here. FC Goa, they have their first matchup lined up today against Jamshedpur FC. We're going to talk about that a little bit later, but now they're the leaders, right? Vanchaj, he's in a whole different form, and if you have Adi Zima in your team, I think you do not need anything better than that. And ATK Mohan Bagan hasn't ever looked better than before. We played one game and have managed to win their game. So this time, a promising start for them. But teams like Kerala Blasters, especially Northeast United FC, they really need to watch out. But let's take a quick look at the schedule for the first game that we have for you guys, and it is going to be a banger. It is Jamshedpur FC going against FC Goa as our match number 7. Then onwards, we have Kerala Blasters going up against Mumbai City FC. Now, TT, this is one of the match that I'm really looking forward to. या फॉर श्योर एंड जो आखिरी मैच आज के दिन का होने वाला वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल एफसी सो ऑब्वियसली ये मैच भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड ओवरऑल अगर आज के दिन की बात किया जाए तो शुरुआती में मुझे लगता है कि जमशेदपुर एफसी को थोड़ा सा इधर देख के खेलने की जरूरत है एंड उसी के साथ आ चुका है आप लोगों के सामने कि किस तरीके से होने वाले हैं मैचअप्स सो जो फर्स्ट मैच है वो हम लोगों को डेकी वर्सेस देखने के लिए मिलेगा वंशज के बीच में एंड वंशज की अगर बात किया जाए ये प्लेयर पिछले वीक पे सबको हिला के रख दिए थे जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाए थे उन्होंने Oh, of course. I mean, DK and Vanchaj going up against each other. The odds are stacked against DK, but we have seen him in the past also defying the odds. And then, of course, Arvind and Adizima going up against each other. Arvind did not have the best of starts, but the only strong point for Jamshedpur FC is their co-op game. So that is something that I'm really looking forward to. But well, we've got something special for you, something really international, as our international colleagues are wishing all the players all the best for this event. Let's take a quick look at the video.
Will CFC defend their trophy or will we see new champions this season? I will be keeping an eye on the defending champs CFC. Good luck. I am excited for the start of the new eISL season. Wishing all the teams the best for the upcoming eISL season. Seems like we've gone places, and this time far wide, where we have also got our international viewers watching this and wishing us luck. The professional players, everyone, most of them, I think, TT, are rooting for CFC, who have not had the best of starts to the season so far. जी हाँ, एंड इसी के बारे में कहने के हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे शुरुआती में कि चेन्नई एफसी एज अ चैंपियन टीम जो कि सीजन 1 पे जीते थे, उनका जो शुरुआत है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन उसी के बीच में बात करते करते शुरू होने जा रहा है आज के दिन का पहला गेम, एफसी गोवा वर्सेस जमशेदपुर एफसी। सो बहुत बहुत शानदार ये गेम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड फॉर्मेशन की बात किया जाए तो 4-4-2 के साथ शुरुआत किया गया है जमशेदपुर एफसी की तरफ से, बट ऑन द अदर हैंड एफसी गोवा हम लोगों को 5-3-1-2 के हिसाब से देखने के लिए मिलेंगे। सो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा शानदार कहने की ये फॉर्मेशन है। एंड आई थिंक एफसी गोवा का जो फॉर्मेशन है वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है एंड बहुत सारे प्लेयर्स यूज करते हुए दिखते हैं अभी। Oh, of course, and I think Vanshaj has had opted for a similar kind of a formation. I'm not 100% sure, but the meta formation that was there, 4-3-2-1, he did not use that last time, and he absolutely destroyed Lokmanyu. So today, he's going with, he's got a lot of wing. I think he's added 2 wing backs, and you can see instantly DK, new spectacles. We love this new look from his side. Vanshaj. Well, let's see what do they have in stores for us. But as the game has already begun, Jamshedpur FC from left to right and FC Goa from right to left. And after the initial kickoff, we can see DK trying to retain as much possession as possible. And let's see what can he make out of this attack. श्योर एक मौका बनता हुआ फिलहाल के लिए टर्न करने की कोशिश था विद बॉल रोल, बट वो जगह नहीं दिया गया। एंड ये जरूरी है क्योंकि आप ऐसे डिफेंसिव साइड जब आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी पुलीत मौजूद थे। या I felt he was offside for a moment. Me too, by the way. I do not know But how he did नहीं that. थे वो। But yeah, even I was confused there. Of course, tried to take an attempt on shot, but regardless, Vanshaj has managed to defend. And now he's gonna go out on an attack of his own. क्या बिल्डअप हो चुका है शुरू। रोनाल्डिनियो बहुत शानदार बॉल कंट्रोल हम लोगों को दिखता है एंड ऑब्वियसली 95 रेटेड कार्ड है। एंड सिर्फ वही नहीं, ड्रिबलिंग बहुत ज़्यादा हाई है। रोनाल्डिनियो बैक पास करेंगे बेलिंगम को। एंड देखिए इधर विथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम रख रहे हैं अगर बात करते हैं जमशेदपुर एफसी की। सो विथ ज़्यादा नहीं दे रहे, इसकी वजह से बीच से पासिंग ऑप्शंस उतने मिल नहीं रहे। सो इसी वजह प्रेशर क्रिएट हुआ एंड बॉल छीना गया। बट थियो हर्नांडिस उसी के साथ हुलीत 1-2-1-2 करके लेफ्ट विंग को एक्सप्लॉइट करके आगे निकलने की कोशिश था, बट बहुत शानदार डिफेंसिव अप्रोच फ्रॉम द साइड ऑफ जमशेदपुर एफसी। We know, of course, V Sharma, he's one of those players who's really calm and patient, and DK has to, watch out. Cannot even let a sliver of opening, because if Vanshaj gets that, he tends to capitalize. And, going up against such a veteran like Lokmanyu, and I think beating him with 4 goals scored, so that shows, to, say that this time in Season 2, he's one of the players definitely to watch out for. बट विथ हकीमी रन नहीं निकाल रहे अभी तक। सो दैट मीन्स आई थिंक विंग बैक्स को इधर पीछे रखा जाएगा। बट एज ऑफ नाउ रोनाल्डो बहुत ही डेंजरस पोजीशन पे उनको बॉल मिला है टू एम्बापे। बट हुलीत जब तक है फिजिक के मामले में हुलीत को हराना बहुत ज़्यादा टफ है। बॉल एक बार फिर से छीनते हुए एंड 1-2 चलता हुआ। सो वंशज की अगर बात किया जाए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले वीकेंड बात कर ही रहे थे, बीच से पास निकला। ओह माय गॉड, व्हाट अ फिनिश! एंड एम्बापे के साथ फर्स्ट गोल वंशज के तरफ से। आई थिंक मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद पहले रोनाल्डो से ही शॉट ले लेंगे, लेकिन उन्होंने
अपने आप को रोका एंड उसके बाद एक पास एंड कोई आंसर ही नहीं था इधर जमशेदपुर एफसी की तरफ से. Oh my goodness, that's where we were anticipating that it could have been a Yeah. chip shot. Did not go for that. Was realizing, it's better to open up chances, and it takes a lot of guts to try and make a pass over there, because there could have been a lot of possibilities where it could have been defended, but that is a player lock coming in from DK, but unfortunately it was an offside. So again, B Sharma off to a really good start, and we know the caliber of this player. If he gets those chances, if you make those defensive lapses over there, because I really felt the defense was in shambles, and they could not really react to that situation, as a result of which, the goal was conceded, which could have been averted though. But now again, Vanshaj back on his attack, but this time the pass a little bit, right in front of the defender, got deflected, and now DK gets a chance for his counter attack, and this time is onside. Again, a player lock on with Ronaldo. R9 just trying to dribble through, maybe makes a pass with Bullet. Oh, tried to shift his legs, did in fact, an L2 fake, but did not work out, and now V Sharma back on the attack. अरे देखिए इधर पे जो फॉर्मेशन है उस पर थोड़ा बहुत चेंजेस लाए हैं क्योंकि इसके पहले मेसी लेफ्ट साइड पे खेल रहे थे एंड रोनाल्डिनियो खेल रहे थे राइट पे एंड इस बार दोनों ही अपना पोजीशन चेंज कर चुके हैं बट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोजीशन पे बॉल लूज करते हुए फाइनली हकीमी बॉल जीते जरूर थे लेकिन रोनाल्डो के सामने उतना इजी नहीं है. एम्बापे बॉल रोल करते हुए बीच से शॉट जरूर नहीं है क्या लेकिन वैन डे सार उतना खास नहीं था वैसे शॉट कि वो इधर वैन डे सार जैसे गोलकीपर को बीट कर पाए. I was kind of wondering how did that not go in, because TT, let's be honest, this is a team of the year Mbappe, and it's a crack card, possibly one of the best cards you can say inside the game, and every shot you take most probably just goes in flying through the net, but this time that was not the case. I think it kind of lacked the angle and the power in that shot. Maybe could have gone for an extra pass, could have done a lot of things, but it's all right for FC Goa because the Gors have the lead at this point, but Jamshedpur FC, they need to strike back. And DK, we've seen him in the past, that one game he had played, I think that was against Peno 7, where we saw him, try and get that early lead, which was sort of cancelled out. And that goes on to show that he's one of those another players that loves to rely on the German crosses that we have seen have been the meta. But look at this pace coming in from Ronaldinho, from V Sharma again. Mendes are saving their day for DK. Mendes are back to back, दो crucial save आता हुआ एंड इसकी वजह से शायद अभी तक जो स्कोर लाइन है वो 1-0 ही है, नहीं तो इधर शायद 2-0 और 3-0 हो सकता था. बट एज ऑफ नाउ जमशेदपुर उनको थोड़ा विथ लाने की कोशिश करना होगा. क्रॉस किया गया था बट हकीमी के साथ हेडर में इधर नहीं जीत पाए रोनाल्डिनियो. राइट साइड से हकीमी फुल पेस से आगे बढ़ते हुए एंड इधर खाली एरिया पे मौजूद रोनाल्डिनियो से एक क्रॉस जरूर आ सकता है. क्या वो क्रॉस लेंगे अभी? नहीं, थोड़ा शॉर्ट पासेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए एंड वैन डे सार आखिरी मोमेंट टच एंड उसी के साथ कॉर्नर मिलेगा. Yeah, a little, that R2 press was a little too much on Bellingham. Had that extra foot there, and as a result of which, he could not, make that cutback pass. But regardless, I think, we've reached our half-time marker, and Vanshaj is starting to feel himself, right? He's been looking so aggressive, he's got an eye for the goal, and every single time, I think mostly we can say FC Goa have been dominating this first half, and Jamshedpur FC really need to rethink on what they intend to do at this point, because there was just that one chance which DK possibly had created, but again, Vanshaj's defense is so good. He's got 5 players on the back, has 2 on the wing backs, and as a result of which, included of course, as a result of which he's been looking really promising. And one thing, like even TT, you had also mentioned that Vanshaj is utilizing his wings, which I have not seen DK do a lot. या एंड आई थिंक इसके पीछे एक ही कारण है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उनके विथ को बहुत ज़्यादा कम करके रखे हैं.
ऑन अटैक ऑल्सो। सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, उनका अटैक पे भी विथ उतना ज्यादा है नहीं, जिसकी वजह से उनको साइड पे जो विथ है लाइक पूरे ग्राउंड को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल रहा। एंड विथ 5 डिफेंडर्स अगर इधर बात करते हैं एफसी गोवा की, सो उनको इधर भेजना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। एंड इन पासिंग की अगर बात किया जाए तो आप इधर देख पाएंगे कि नंबर 10 जो कि है वो मोस्ट प्रोबेबली मेसी रहने वाले या फिर रोनाल्डिनियो समथिंग, कोई दोनों में से कोई एक होंगे जिनके साथ उतना विंग का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। सो ये एक कारण हो सकता है। सो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हाफ के ऊपर किस तरीके से चेंज होता है। एंड जिस तरीके के पोजीशन पे थे, बट ये जो मिस पासिंग है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं आपको, वो चाहे आप 1-0 से आगे भी क्यों ना हो, क्योंकि जो लीड आपको मिला है वो कभी भी आप नहीं चाहते हो कि वो मिस हो जाए। बट देखिए दोनों ही तरह से मिस पासिंग एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये बाद में जाके। Yeah, indeed, it might create a lot of trouble because at this point, giving possession to V Sharma is not the best of ideas as trying to press in through his left back. Theo Hernandez passes it on towards Hullet, and we've got to ensure. See, look at him. He's just taking his sweet time. He knows that there's no point in being impatient and a little too much power for the big man. Goes out for a throw, and now DK, he's back on his attack. A good L1 R1 triangle being made over there, driven long pass, and it was a this is again a second variation of that, and this was a really good take by Mbappe. But that composure needs to be there inside that final third whenever he's trying to get in, just barring that first goal. We have seen multiple opportunities created by V Sharma, but not converted into a goal, which could possibly have been knowing his caliber and standards. क्या एंड आई थिंक पिछले पास में थोड़ा सा डिले हो गए थे, दैट्स वाई, नहीं तो एक और बहुत अच्छा मौका बन सकता था। बट लीड से एम्बापे बहुत ही जल्दी 1-2 करते हुए, एंड बीच से एम्बापे मौका जरूर था शूट लेने का, लेकिन थोड़ा टाइम लेके फाइनली 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश, एंड वो करेंगे भी विथ अनदर गोल। एम्बापे जिसके बारे में आप बात कर रहे थे कि टीम ऑफ द ईयर एम्बापे, वो रुक के एक जगह पे रुक के भी ऐसे शॉट ले सकते हैं जो कि आपको दिखेगा भी नहीं कि कब घुस गया गोल के अंदर। Yes, and with Mbappe, with that left-footed, it has to go in, right? There's no chance on earth that he misses that shot from that angle, and he made sure that he increases this lead. And now DK, he's not got any more time to contemplate on what's happening. He really needs to get in because pressure is going to get created for Arvind because his individual matchup is against Hathi Zima, and we know what kind of a formidable opponent he is, making those small little mistakes, and V Sharma ensuring that he reads the ball very well, and then now he's going to retain position. So I think V Sharma is not trying anything too complicated. What he's trying to do basically is just maintain as much possession as he can. And now look at the way he's changing sides, right? Left to right instantly, no problems whatsoever. And Jamshedpur FC desperately needed this pause, just to get that little mental reset. We'll have to see in terms of strategy what changes is he going to opt for. या एंड आई थिंक जिस तरीके से लाइक जो फॉर्मेशन में खेल रहे हैं इधर, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो विंग बैक्स है वो और भी ज्यादा इनको एडवांटेज दे रहे हैं ऑन अटैक। जब वो अटैक में जा रहे हैं तो उनके पास 3 से 4 ऑप्शंस रह रहे हैं पासिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हकीमी राइट साइड से रन निकाल रहे हैं, लेफ्ट साइड से थियो हर्नांडेज रन निकाल रहे हैं। एंड अगर हम लोग बात करते हैं डिफेंसिव साइड की, तो डिफेंस में तो 3 डिफेंडर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल ही रहे हैं, एंड विद दैट बेलिंगम भी हम लोगों को बहुत शानदार तरीके से थोड़ा सा जो है वो पीछे रह के लाइक मिडफील्ड पे खेलते हुए दिखते हैं। सो वो बहुत ही अच्छा, एक बहुत शानदार फॉर्मेशन के साथ खेलते हुए, एंड इसका प्रॉपर फायदा मिलता हुआ अभी तक। और अगर हम लोग बात करते हैं इधर लाइक ओवरऑल गेम की, तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर एफसी अभी भी शायद वो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, बट उसके पहले ये समझना होगा कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही विड्थ तक कम रख रहे हैं, जो अभी भी रख रहे हैं। इसकी वजह से हकीम एंड थियो हर्नांडेज को भी प्रॉपर मौका मिल रहा है कि वो रन निकाले और ओवरलोड किया जाए विंग को, एंड वो ओवरलोड कर भी रहे हैं। सो ये चीजों को रोकना होगा, अगर रोक पाएंगे तो ही इस मैच पे शायद वापसी आता हुआ दिखे, नहीं तो वी शर्मा शायद एक और गोल स्कोर करने वाले कुछ ही देर के अंदर। See, there you go. Substitutions have been made in from Jamshedpur FC, and big ones at that.
And now that is, that's a big question if he can make something out of this game, because so far, like you said, you know, they haven't been looking the best and haven't really been utilizing a lot of that width over there, just playing box to box as much as possible. But V Sharma very patient on the defense, right? He's not been making any of those, rush tackles or anything. He's just been letting the ball come to him, and the moment he gets that little window of opportunity, utilizes that and defends away. So V Sharma has been good in both his attack and defense, and props to DK, right? He's been holding on, but for how long? That's a big question, because this is a third coming in, and look like the defense was completely scattered, had no option, and look at it, there was barely any trouble for R9, just through score past Vandasa. And doesn't matter if you are using Vandasa, right? The goalkeepers Yeah. in this version of FIFA 23 are quite erratic. Sometimes, they make saves that you can't even imagine, and sometimes they let go of balls like this. Another one being shot, and just when we were thinking that maybe Jamshedpur FC, after those substitutions, could make a comeback, this seems like the final nail in the coffin, as V Sharma scores one more quick succession goals. For now, V Sharma is chilling and obviously why not? फोर्थ गोल स्कोर कर चुके हो एंड उसी के साथ जो बीच में टाइम उन्होंने लिया था, शायद वो इधर अटैक को थोड़ा पुश कर चुके हैं ऊपर की तरफ, एंड दैट्स व्हाई इधर जो पेसी अटैकर्स है, जो स्ट्राइकर्स है, उनको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं. वही चीज इधर हम लोगों को देखने मिला हुआ, एंड जो स्टैट्स के चेंजेस उन्होंने किए हैं वो प्रॉपर फायदा नहीं दे रहे. देखिए कितना ज्यादा हाई लाइन खेल रहे हैं डिफेंस के साथ, और यही जगह पे एक्सप्लॉइट करके गए क्या इधर एफसी गोवा. सो ऑब्वियसली हम लोग विद के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुश कर दिया अपने पूरे के पूरे टीम को एंड डिफेंस लाइन को भी, एंड डिफेंस लाइन के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, एंड बीच से इसी वजह से बहुत सारे गैप्स मिल रहे हैं. हुलीत आगे आ चुके हैं, उसी के साथ हम लोगों को इधर दिखेगा एम्बापे भी. सो पासिंग ऑप्शंस तो बनते हुए फाउल किया गया. ओह माय गॉड. Oops. I hope the ref did not see that. I hope there's not going to be a free kick from that position, because that would have been really deadly. And yes, like you said, I think DK has gone for maybe ultra attacking a little bit, has increased, and his players are all playing high on the line, and this could have been a good chance. Possibly still the ball being retained, went for a green time, but defenders too many present over there from V Sharma, where now he's gonna break through his defenses again. Just was hoping that he could get Haaland on the ball, which he did, but the control was not there, as a result of which, the threat was averted. And now DK looking promising again. A good chance, passes it on towards KVD, and there you go. A beautiful touch, and finally he manages to score and gets himself on the board. But I think TT, it's a little too late for him to really, just get over the 3 goals deficit that he's behind on. या एंड पिछला जो गोल था वो आई थिंक थोड़ा बहुत गलती की वजह से हुआ, बट बिल्ड अभी तक भी नहीं दिखा है. कोशिश अभी भी है कि बीच से पास निकाला जाए. पहले ऑलरेडी मौजूद थे ऐसा पासिंग ऑप्शन, बट बेलिंगम प्रॉपरली बॉल ड्राइव करते हुए. केविन डे ब्रुयने, रोनाल्डो, एम्बापे, बेहतरीन 1-2, लेकिन डिफेंस लाइन अपना प्रॉपर काम करता हुआ. एफसी गोवा हकीमी काउंटर पे जाते हुए, एंड देखिए कौन कौन दौड़ रहा है. हालैंड पहुंच चुके, उसी के साथ रोनाल्डो खाली, उसी के साथ शॉट, लेकिन वैन सार इस बार बचाने में सक्षम हुए. Yeah, absolutely, and I think it was a short corner, and now V Sharma can just chill, right? He knows that he's doing the job for his team and keeping his customs on, right? Last time, I think, even against Lokman, the score was 4-1, and this time also ensuring that it ends at 4-1. But regardless, I think with this game, he's made it to the top in terms of the goal scorers. 28 goals, 8 individual goals scored for V Sharma. What a start to his eISL Season 2 campaign, and he's been looking stronger than ever
so determined and was always in control of the game. There were fairly, moments where you could say that Hmm. yes, maybe DK has taken some control. Mostly it was just DK, dancing to V Sharma's tunes, and look at how well coordinated his attacks were. And despite, even Mbappe being, I think, four-star weak-footed player, even with that, he did manage to take a few shots initially, but on the right foot, we know how strong this player is. Barely misses any shots, and even with Haaland, he's got the best players. Why not utilize it? And yeah, an easy game for V Sharma nonetheless. या आई थिंक देखे तो वही लगा कि इजी गेम था फॉर वी शर्मा एंड वो इजी गेम बनाया गया था उनकी तरफ से एंड ऑब्वियसली डीके की भी अगर बात किया जाए उनकी तरफ से थोड़ा बहुत गलतियां जो है वो हम लोग को नजर आता हुआ दिखा बट शुरुआत देखिए मैच नंबर 7 का क्या शानदार किया है एफसी गोवा ने स्पेशली वी शर्मा ने 4-1 के साथ एंड पिछले वीक पे अगर तो वी शर्मा का शुरुआत कुछ ऐसा ही रहा था वो हमेशा जब जब स्टार्ट करते हैं कुछ स्टाइल के साथ करते हैं और पूरे एफसी गोवा वैसे ही अभी ट्यून में झूमते हैं और इस बार तो ये मैच जीतने के बाद उनके फैंस और भी ज्यादा मजे में होंगे लेकिन जो गेम नंबर 2 है वो होने वाला है कोऑप और कोऑप के अंदर क्या हम लोग को जर्मन क्रॉसेस देखने के लिए मिलेगा जैसे कि पिछले वीक पे दिखा था वो देखने की जरूरत है क्योंकि अरविंद एंड डीके को बहुत सोच समझ के खेलना होगा So far we've seen all these clubs, right, getting into play, and I must say that FC, in fact, Jamshedpur FC, they've been the best co-op team, at least for me, with the way they played and how good or how well the players were synchronized with each other. So this is Jamshedpur FC's strong suit. In contrast to FC Goa in the previous season, TT, you weren't there, but just a quick reminder to our viewers, FC Goa had a really good co-op team. So now Vanshich knows, and I think over the time he is going to improve his coordination with Adizima. Both of them are quite experienced players in the community. They're well known. It's just about dancing together on the same tune. So all they've got to do is figure that one out, because for all the viewers, if FC Goa also managed to win this one, then there is nothing left for Jamshedpur FC to fight for, and especially for Arvind, that's gonna be really depressing at that point. When you know already that you've lost the entire matchup, and still you have to play just to try and win it. For the pride and for your individual stats, and which might just matter if for the playoffs, if your scores are tied with some other clubs, and then that could be taken into consideration. But barring that, the first game, I think TT, we've discussed about it. V Sharma did not do anything really flashy. He played directly to the basics, made the right through passes, made the correct passes. Even inside the final third, he looked really calm, composed. It was a 4-1 scoreline, which I think could have been a little bit more considering how many chances V Sharma was creating. And then in the second half, we saw that DK did, get the players on a high line. His defense, which was absolutely in tatters, and that is where V Sharma got 2 easy goals. Just all he had to do was maintain that composure. या एंड आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए पहले मैच के बाद तो एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला था वो था विंग को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि बार बार सिर्फ आई थिंक 2 to 3 टाइम्स था ऐसा जिधर मौका बन रहा था गोल के लिए बट देखिए उस एरिया पे बॉल को सिर्फ मिडिल में रख दिए एक टाइम तो ऐसा भी था कि सिर्फ और सिर्फ बेलिंगम के साथ ही बॉल को ड्राइव किया जा रहा था और कोई उनके पास पासिंग ऑप्शन भी नहीं थे तो उस टाइम पे अगर लेफ्ट साइड से ऑलरेडी रन निकाल चुके होते थियो हर्नांडेस तो मे बी और फायदा उनको हो सकता था पासिंग ऑप्शन एक एक्स्ट्रा हो जाता एंड अगर थियो हर्नांडेस को दिया जाता तो वो कटिंग करके पीछे से बॉल लेके आ सकते थे एंड उधर ऑलरेडी उनके पास एम्बाप्पे हालैंड मौजूद थे लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखा बट वो तो था पिछले मैच का बात बट इस बार शुरू होने जा रहा है कोऑप एफसी गोवा वर्सेस जमशेदपुर के बीच में जिधर जमशेदपुर एफसी उनको बाय एनी हाउ इस मैच को जीतना ही होगा या फिर एटलीस्ट ड्रॉ करने की जरूरत है Alright, so now I think we've got Jamshedpur FC from left to right, and FC Goa in orange from right to left, and this time Adik and Arvind going up against V Sharma and Adizima. FC Goa already winning their first individual game. Now it's time for co-op, and this time we did notice one thing. Adizima, he's been a professional player.
He's been also a professional esports FIFA coach, so has quite a lot of stint in his college football, and is usually the one calling the shots. So playing with his formation, and just when we were thinking that DK and Arvind could have set up a good chance, I think again that calmness being shown, and as a result of which the threat that had been dealt with. Yep. And throw in finally from the side of FC Goa. But FC Goa, okay, nice. So Beckham finally हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, एंड ये मुझे लग रहा है कि आदि सीमा का स्टैट है कि वो इधर लेके आते हैं. पिछले वीक पे भी हम लोगों ने देखा था कि उनके तरफ से हम लोगों को बेकम देखने के लिए मिलते हैं. कंट्रोल काफी अच्छा है, ड्रिबलिंग काफी अच्छा है, बीच से ओवरस्टेप करके एक शॉट लेने की कोशिश था, बट नहीं, वो इधर नहीं हुआ. लेफ्ट हैंड साइड थियो हर्नांडेस एंड रोनाल्डो बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन करके खेल रहे हैं जमशेदपुर के लिए. सो ये कुछ नया देखने के लिए मिला, बट जितना ज्यादा पासिंग ऑप्शन रहेंगे उतना ही बेहतर. Yeah, of course. I mean, by Ronaldo, here viewers we mean R9, Ronaldo Nazario, because we haven't seen CR7 really, but this is a very good chance created by Jamshedpur FC. A cutback going towards Ronaldinho, goes for that shot again, right beside the crossbar, but oh, a little too unlucky. And this is what I was talking about, right? The moment Jamshedpur FC, they come to co-op, it is a whole different club that you feel like, you know, that the teamwork is amazing between these players, and these are the passes that can absolutely just rip apart your defenses. And for a moment, I felt that this could have possibly gone in, but I have no idea how FC Goa managed to defend that. But again, you know, Jamshedpur FC, they're on their attack this time, went for a green time finish. But the shot lacking a little bit of power, easily dealt. जी हाँ, लेफ्ट साइड, बट बहुत ही डेंजरस पोजीशन पे बॉल इधर लूज कर चुके हैं. जमशेदपुर के लिए एक मौका था, लेकिन उतना कुछ खास फायदा नहीं हुआ. लेकिन इस बार हम देख सकते हैं एक चीज कि बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ही टीम्स ग्राउंड का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं. राइट हैंड साइड पे ज्यादा पासिंग ऑप्शन थे नहीं, इसी वजह से लेफ्ट पे ज्यादा हम लोग को प्लेयर्स नजर आता हुआ. एम्बापे ऑलरेडी मौजूद थे, तो इस लाइक ऑफ साइड लाइन के बाहर, इसी वजह से उनके पास नहीं गया, नहीं तो इधर एक गोल आने के चांसेस बन सकते थे. It certainly could have been. You know, even I was wondering why did Mbappe not just retreat back, but it was quite evident, right? He was ahead, and had he taken, would have been an offside. But well, nonetheless, this time I think Jamshedpur FC, they are utilizing the width perhaps, and trying to create these chances which could really help them. And well, again, the timing of those balls coming in hasn't been the best for FC Goa, as a result of which again another offside. But one thing for sure, you know, they're utilizing their left wings a lot, you know, through Messi trying to get in, beat the defenders. But I think FC Goa have read it perfectly well with the right back Hakimi. And now look at the run, you know, he's a little too offside, so has to buy the time. But passes it on towards R9. But this time, the defense sturdy as ever deals with it. एंड आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बॉल के ऊपर टाइम बिता लिए थे, पास कर देना चाहिए था. अगर कर देते तो शायद इधर बॉल उनके पास ही रहता, लेकिन एक गलत पास, एंड जितना भी अभी तक बॉल बिल्ड किया जा रहा था वो अभी के लिए नाकामयाब होता हुआ. वैंडे सार ऑन द बॉल काफ़ी अच्छे हैं, एंड विद पास, एंड उसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग पासेस एंड स्पीड, सब कुछ वैंडे सार का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. और ओवरऑल पे अगर बात करें तो बेस्ट गोलकीपर है इस पूरे इंटायर गेम का. बट बेकम के साथ जो पासेस है वो बहुत अच्छा निकलते हैं, मेनली लॉन्ग पासेस. बट लॉन्ग पास अभी तक नहीं दिखा है बेकम की तरफ से, सो वो चीज़ देखना होगा कि कब तक आता है. बट रोनाल्डो नजारियो जिस तरीके से बॉल कंट्रोल रख रहे थे, देख के लग रहा था शायद अकेले ही इधर चले जाएंगे, डिफेंस भेद के गोल मार देंगे, बट वो होने नहीं दिया. ऐसे गोवा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आया आज के दिन पे, वो चाहे डिफेंस हो या फिर अटैक. एंड क्यों ना हो, शुरुआत अगर आपका 4-1 के साथ हुआ, सो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है. Yeah, indeed. I think no doubting that. And this time, again, TT, no,
repeatedly FC Goa making those small errors and utilizing it. Jamshedpur FC to the max, but this time again, it's so difficult, playing as a co-op team. You have to know exactly what position your teammate is in. Where should you take those through passes, and that is definitely a cause of concern, and it's very difficult. And even on individual levels, players have faced a lot of problems. Few of the players who seem to crack the code are absolutely broken when it comes to the co-op matches. And for now, FC Goa utilizing the width, and that's a beautiful cross, but not towards the intended target. And with that, the ball ported out. On we go to the half-time. This time, however, both the teams have not succeeded in scoring any goals. And look at even the possession percentage. It's 50-50. Could be anyone's game. In fact, Jamshedpur FC, they've been trying to take a few shots. In fact, 2 shots out there. And have certainly, I must say, been the better team so far in the first half. Yeah. But I think अभी तक जिस तरीके से गेम गया, जमशेदपुर एफसी बहुत ज़्यादा कोशिश उनके तरफ से किया गया था कि वो इधर से अटैक कर पाए, बट वो अटैकिंग थर्ड पे जाके जो फिनिशिंग है वो उनको नहीं मिल पा रहा, तो उसके ऊपर जरूर वो नजर रखेंगे. I'm really sorry to cut you off, but this is something really important that I felt had to be brought up. Look at how much Jamshedpur FC is utilizing their left wings, right? You can see those heavily darkened white A patches, and FC Goa, they've been doing also the same. So both these teams utilizing their left wings and trying to create so many opportunities. Go on. जी हाँ, and I think वो इसीलिए भी होता है क्योंकि वो स्क्रीन के सामने होता है, तो उसकी वजह से कभी कभार हो जाता है कि आप एक ही साइड को ज्यादा यूज करते रहो, लेकिन उसी जगह पे अगर आपको नहीं मिल रहा रिजल्ट्स, सो आपको विंग चेंज करना चाहिए, जो कि इस हाफ के ऊपर तो नहीं देखने के लिए मिला. सो या आई थिंक इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ शॉट्स जो कि हम लोगों को दिखाया जमशेदपुर की तरफ से, हालांकि वो कन्वर्ट नहीं हो पाया था, बट ऑन द अदर हैंड एफसी गोवा की तरफ से अभी तक शॉट्स भी नहीं आए. सो ये चीज जो है वो जरूर देख के खेलने की जरूरत है, क्योंकि एफसी गोवा अभी तक अटैक नहीं बना पाए थे. एंड एज यू सेड अर्लियर कि एज अ कोऑप टीम जमशेदपुर एफसी बहुत बहुत ज़्यादा शानदार टीम है. तो लेट्स सी लाइक किस तरीके से वो अभी हम लोग को आगे परफॉर्म करते हुए देखेंगे. बात कर ही रहे थे, और सेकेंड हाफ के शुरुआती कुछ मोमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश था, लेकिन हकीमी मौजूद जब है तब उतना इजीली आप भेज नहीं सकते लेफ्ट विंग. Yeah, of course, the team of the year, Hakimi, another fine card. You can say one of the best right backs that we've got in the game, and too difficult to get in. Has got the physicals, the height, the pace, the right defense. We've seen time and again these players utilizing his pace. Just getting in through from the wings and making that pressure applied. And this could be a good chance with Beckham. You can anticipate those beautiful crosses going in, but a lot of Beckham users though we've seen in eISL season 2, and is the team of the year icon Beckham, I believe. That's the card that they have opted for, and the other icon cards of Beckham weren't as good as this one. This one is a little bit more viable, and there you go. FC Goa, I think they have changed the formation again. Did we witness that? Because in the starting of the game, the formation was quite different, and now they've opted for a different formation. मोस्ट प्रोबेबली. एंड आई थिंक ये गेम के अंदर बार बार जितना आगे बढ़ते रहेंगे, बार बार हम लोग को ये फॉर्मेशन चेंजेस जो है वो फॉर श्योर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तक किसी को भी उनका जो सफलता है वो हाथ नहीं लगा है. बट अगर हम लोग बात करते हैं इधर एफसी गोवा की, से उनका लेफ्ट साइड पे पासिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है. अगर हम लोग बात करें तो वो चीज़ को देखते हुए इधर खेलने की ज़रूरत, बट हो चुका है शुरू एंड पॉज हो चुका है ख़त्म. बाय द वे कोई सब्स्टिट्यूशन अभी तक दिखा नहीं है. आई थिंक वो आखिरी 70 मिनट्स के बाद ही जाके अपना जो सब्स्टिट्यूशन है उसको यूज़ करेंगे मे बी. I think we just witnessed one Beckham being replaced just when we were talking about that, but Ronaldinho, this is a beautiful volley coming in, hits the crossbar, and such a nice chance created for FC Goa.
Messi coming into the game instantly, creating an impact. And TT, I know the reason behind that smile. Your favorite player, Lionel Messi, the winner of this year's World Cup. And wow, I mean, the Argentina did quite have a run, but as a result of which, Messi also received the Team of the Year card, and that's also cracked. या एंड वही चीज कि दिखा आते ही इम्पैक्ट तो क्रिएट हुआ ही था बट लेट्स सी लाइक मेसी का जो ड्रिबलिंग पावर है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है क्योंकि मेसी इंडिविजुअली उतना ज्यादा यूज होता हुआ नहीं दिखा है अगर हम लोग बात करते हैं ईआईएसएल सीजन 2 के अंदर यूजुअली उनको यूज किया गया है क्रॉसेस के लिए पासिस के लिए बट कुछ 2-3 गोल्स ऐसे भी थे जो मेसी के थ्रू खिलाया गया था बट इस बार थोड़ा ज्यादा पेस इसकी वजह से बॉल लेके चले गए थे बैकलाइन के बाहर तो फाइनली एक गोल किक आता हुआ दिखेगा एंड मिडफील्ड के ऊपर बहुत ही ज्यादा 1-2 करते हुए राइट साइड से निकल जाएंगे जॉर्जिनियो क्या ये मौका बन सकता है नहीं वर्जिल वैन डाइक द मॉन्स्टर This time the run looks good. Oh, just beating through the defense and Ronaldinho making that run. FC Goa a little bit confused with Ruud Gullit. The defender has been beaten, and with R9, I think FC Goa at this point they're just keeping calm and making sure that the nerves don't shake, and just making sure they have the right passes and not overstepping on most of the occasions with Ronaldinho. You've got that fitness. You can just, you've also got the guile where you could just dribble your way past the defenders. And we haven't seen a lot of those skill moves being, performed by all these players. These have been pretty much the common ones. We've seen a lot of step overs. Step overs have been the meta so far in FIFA 23. The step overs and the German crosses, a lot being used by the players. Not a lot of roulees have been visible here so far, and usually in those frontal encounters those roulees come into play. But this is such a good chance, again foiled. I really felt TT, correct me if I'm wrong, should have directly gone for a shot with Bellingham and could have also scored. या उनको ये करना चाहिए था बट ओवर थिंक करते हुए दोनों ही टीम्स कहीं ना कहीं अगर देखा जाए क्योंकि बहुत सारे चांसेस दोनों को ही मिले हैं जिधर जिधर उनको सिर्फ एक पास देना था एंड उसके बाद वो फिनिशिंग के लिए जा सकते थे बट वो कन्वर्जन नहीं दिखा एम्बापे टू हकीमी हकीमी से वर्जिल वैन डाइक एंड वैन डाइक जब तक है तब तक कुछ भी हो सकता है डिफेंस में कोई भी वो बॉल जो वो छीन सकते हैं लेकिन इस बार रोनाल्डो के लिए ये पास था बट अगर हम लोग बात करते हैं फिजिक की सो रोनाल्डो उतना फिजिकल नहीं है बट इस बार रोनाल्डिनियो से मेसी एंड फिनिशिंग विद मैजिक पहला गोल आता हुआ एफसी गोवा की तरफ से एंड क्या शानदार पासिंग रोनाल्डिनियो का जो वो पास था वो पास पे ही लिखा हुआ था कि ये गोल जाएगा एंड वही चीज मेसी के पास बॉल आ चुका है वो तो फिनिश करने ही वाले हैं Oh, this is horrendous for Jamshedpur FC because FC Goa, they've taken the lead, and from now on, you could clearly see, the sadness just taking over DK as he knew. This could be lights out for him. But take a look at this replay. Ronaldinho, this last moment switch around, passing it towards Messi, and Messi does not miss from that angle, especially when he's on his stronger foot. And I think FC Goa could make a few substitutions, maybe could replace R9 because I feel his stamina bar has completely depleted, less than half. So that could be possible. But one thing for sure, if we could say the first half was dominated by Jamshedpur FC, but this time FC Goa, they have been creating a lot of chances. Look at that, especially after the second half. There has just been that one opportunity for Jamshedpur FC where they got a little close. But it is time and again that FC Goa, they have been creating the chances, and you could see those wide bars not even exceeding a little bit also, because one thing for sure, Jamshedpur FC, they do not have control over the ball. So as a result of which, FC Goa, they've started to dominate, and suddenly they are one goal up. वाओ क्या शानदार शुरुआत बट विच को लेके आया गया है ये कार्ड सेंचुरियन
इब्राहिमोविच बहुत बहुत ज़्यादा क्रैक्ड है ये भी, क्योंकि उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता ओवरऑल पे भी अगर बात किया जाए, नॉट इन लाइक कॉम्पिटिटिव है, बट जो नॉर्मल गेम है उस पे भी ज़्यादा दिखते नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्ड है। बट इस बार दिखेगा। और देखिए क्या शानदार तरीके से बॉल रोल करते हुए आखिरी पास, बट वर्जुअल वंडा एक अगर नहीं रहते तो एक और गोल आता हुआ दिख सकता था। बट मुझे लगता है कि इधर जमशेदपुर एफसी स्पेशली देखिए थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहे हैं, उनको उनके एक्सप्रेशन को देखे मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहे हैं। इसकी वजह से भी कभी कभार हो जाता है कि आप गलतियां कर देते हो, तो कूल रह के खेल सकते हैं वो, क्योंकि अभी जो शुरुआत है टूर्नामेंट की, वो जितना कूल रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट उनको मिलेगा। DK is always like that. I'll tell you. Even during the last season's eISL, he kind of makes those faces, and just when we think that okay, it's a little bit tense, it's just his passion oozing out in terms of his expression. So can't help that. But regardless, very passionate FIFA player like we just mentioned, and has improved over the time. But I think the improvement not enough, especially against a team like FC Goa and Jamshedpur FC. They know they've lost this, and FC Goa can take all the time in the world. And there you go, the final attempt by FC Goa, and after which the referee is gonna blow the final whistle, and this is gonna be a clean victory for FC Goa. And there you have it. Again, another win. 2 games played already. 2 of those games won. And in terms of even the scores on the leaderboard, I think should have no trouble going up into that first position as FC Goa. They are just stomping through. Just when we felt like that first half looked a little bit nervy for them, they took their time, made a few tweaks here and there, made those changes. Especially the biggest one was substituting Messi, substituting Beckham and getting in Messi, because right after Messi came in, that player made so much impact over the game. Yeah, and I can feel the pain of Jamshedpur FC, especially DK and Arvind, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट पे जब आप ऑलरेडी एक गोल से पीछे रहते हो और आपका टाइम वेस्ट किया जाता है, तब कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है थोड़ा। बट या इधर चांसेस काफी ज्यादा मिले थे, हालांकि मैं ये भी कहूंगा ये यहाँ पे मेसी का जो वो शॉट था, इस पे भी एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता था, बट लकी थे कि उधर गोल नहीं हुआ। बट उसके बाद जाके और लक इनको नहीं रोक पाया, क्योंकि रोनाल्डिनियो का ये पास एंड उसके बाद मेसी राइट फुट पे पहले बॉल को रिसीव किया एंड उसके बाद लेफ्ट फुट से फिनिश किया। सो ये था कुछ मैच समरी की अगर बात किया जाए। फर्स्ट मैच वी शर्मा एफसी गोवा को लीड दिए 4-1 के साथ, एंड उसके बाद कोऑप मैच के अंदर भी आदिश ईमान वी शर्मा स्ट्रॉन्ग साबित हुए ऑन जमशेदपुर एफसी। बट जो आखिरी गेम है आदिशिमा वर्सेस अरविंद, आई थिंक इस पे ज्यादा कुछ वेरी नहीं करने वाला है, क्योंकि जो पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स तो जाने वाले एफसी गोवा के पास। बट आई थिंक ये मैच जो है वो अरविंद जीतना चाहेंगे बाय एनी हाउ, क्योंकि अगर वो जीतते हैं, जैसे कि आपने भी कहा था शुरुआती में कि ओवरऑल पॉइंट स्टैंडिंग पे बाद में जाके इनको मदद मिल सकता है अगर वो जीतते हैं तो। Indeed. And at this point, but still at the back of their minds, Jamshedpur FC, they've taken such a huge blow, right? Another game. Even last time it was a little bit contested, came down to the final game. But even in that Beno 7, we saw what sort of comeback he had made. I think that was against DK, if I'm not wrong. Yes, it was against DK where he won his game, because Jamshedpur FC had won their co-op game and the first game was sort of tied. So DK was having that lead, and suddenly out of nowhere Beno 7 makes that comeback, and they go on to kind of equalize the entire thing, and now they know that they're on the losing side. So Arvind are exactly not in the best of positions. They try to make a few switch arounds in their playing order, right? Last time Arvind used to be the first player who went to play, but this time it was DK who comes up, and V Sharma takes him out for a spin, and completely just bamboozling him. A 4-1 victory, and then in the co-op, it seemed very evenly contested, where we were looking in terms of chances created, in terms of that coordination. Jamshedpur FC looking really strong, but cometh the second half, and it was FC Goa taking control all over again. And with that, they've also
ladies and gentlemen, just a quick reminder that they have won this matchup, so they're gonna get all the points out of this one, no matter whatever the outcome is of that third game. It's not gonna change anything on the जी points standing. And Goa, I think FC Goa rather, they will just take over that first spot, and we'll be really happy. या ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी बट जो आखिरी मैच है आई थिंक मुझे लगता है कि अरविंद शायद फुल्ली खेल सकते हैं नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा प्रेशर ना लेके एंड उस मैच के ऊपर वो एकदम खाली माइंड के साथ खेलेंगे जिधर मुझे लगता है कि उनका परफॉर्मेंस और बेहतर आएगा, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर रहता है उस टाइम पे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। बट के लिए मुझे थोड़ा सा खराब इसीलिए लगा क्योंकि ओपोनेंट में उनके वी शर्मा थे जो कि इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, तो उनके सामने जाके अगर आप एक भी गलती करते हो छोटा सा, तो वो उस गलती को इतना ज्यादा इतना बार एक्सप्लॉइट करेंगे कि आप फिर खुद ही प्रेशर में आ जाते हो एंड उसी के साथ बहुत टेंशन में भी आ जाते हो। तो वही चीज़ इधर देखने के लिए मिला। बट आई थिंक ये प्लान्स पहले से बना के आना चाहिए, ज़रूरी होता है। बट उसी के बीच में बात कर ही रहे थे, 2-0 ऑलरेडी हो चुका है जिधर एससी गोवा इस मैचअप को जीत चुके हैं, लेकिन ये आखिरी मैच कोशिश करेंगे अरविंद कि वो इधर जीत के जाए, क्योंकि बाद में जाके उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। Well, let's see. The game has already begun, and it is Arvind again. This is clear for Arvind. It's not going to be easy as Jamshedpur FC with their white kit from left to right, and FC Goa with their signature orange from right to left. We know that Adizima is one of those experienced players, but Arvind being from the certain circuit is really good on his defenses, and just a glimpse of that. Very well timed tackle, I must say. Just waited for that right moment and instantly charged in for the tackle and succeeded in getting the ball. And yes, TT, I completely agree with what you just said, because I really feel like, once the pressure is lifted up, you have nothing to lose. You have already lost. So you kind of tend to want to, take your nap with a win, perhaps, just for a, boost in confidence, maybe for next time, because it's still those initial phases of the campaign in eISL season 2. So all these players still do have a good chance, even after a lousy start they could make a comeback. Northeast United FC, just look at them. They're such a strong team, have two of the best players of our previous eISL, Saransh, one of the winners, and you've got Imad, and they still went on to lose against, if I'm not wrong, Bengaluru FC. So anything is possible, right? And Charanjot, an absolute monster, a demon, whatever you call him. And if you've got Shagnik along with him, so kind of just adds up to it. So this season, it's going to be interesting to see what can Charanjot and Shagnik do this time. Will this be Bengaluru FC's year in the ISL, especially when you've got so many good teams, and even we've got Mumbai City FC's matchup later on, then FC Goa being one of the strong contenders, Kerala Blasters FC looking really good, in fact really strong on pen and paper, but haven't really converted that into the game as of now. या इन दिस सीजन आई थिंक जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं जो डेब्यू कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ उनके एक्सपीरियंस, बट या आईएसएल के ऊपर जो न्यू प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। बट इस बार बीच में से मौका मिला एंड उस पे जिस एरिया पे बॉल मिला था R9 को रोकना इम्पॉसिबल था एंड वही चीज हुआ। बट सोच रहे होंगे अभी अरविंद कि मुझे क्यों नहीं खिलाए शुरुआत में तो शायद इधर अभी भी चांस बचता। बट ये टीम में ऐसा ही होता है कि आपको दोनों को ही एक साथ समान तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है अगर आपको उस मैचअप को जीतना है। बट अगर नहीं कर पाते हो फिर कुछ नहीं कर सकते। बट शुरुआत काफ़ी अच्छा हुआ है जमशेदपुर की तरफ से। Yeah, of course, and off to a really good start. And Arvind is one of those players who's very calm, very consistent, and gets the job done for his team. So after a good start, but we still cannot write off Adizima at this point, because I know the potential of this player. He's he's one of the kings of comebacks. Every single time you think that maybe the game's gotten out of hands, and he's the one who kind of gets him and his club back into the game and wins it out. But this time looks really strong for Arvin. Did try to create a chance, was looking for that passing lane, was looking for that back, but could not get through.
And there you can see clearly, FC Goa have been dominated by Jamshedpur FC so far into the first half, where they've been making most of the passes, they've been taking those shots, they've been keeping possession, and FC Goa sort of have been pushed back into a little bit of a defensive style. And Hmm. I think this little pause is where Adizima sort of makes a few tech tactical changes and Hmm. gets himself back into the game. But I think Adizima will change his tactics, as you said. एंड मोस्ट प्रोबेबली इधर जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है वो भी चेंज होने वाला है, क्योंकि पिछले दिन भी लाइक पिछले वीक पे अगर हम लोग बात करें, उनका जो है शुरुआत कुछ खास नहीं था, लेकिन सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में जाके वो बहुत सारे लॉब बॉल्स लॉन्ग पासेस खेलना शुरू कर दिए थे, तो मे बी वो चीज हम लोग को इधर देखने के लिए मिले। बट एक और मौका बनता हुआ दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली ऑन द साइड ऑफ जमशेदपुर एफसी, लेकिन नहीं, उधर डिफेंड किया गया था। बट इस बार एम्बापे Oh, एम्बापे अकेले ही काफी है, उनको स्प्रिंट पे तो कोई नहीं रोक सकते। एंड what? ये बार था, ओह What? माय गॉड। Oh, oh my goodness. How did that happen, TT? I mean, Mbappe on his strong foot takes a shot and it hits the crossbar. And we know this card is literally, I told it out loud on stream. It's a cheat code to the game, right? You have the team of the year Mbappe. I was just checking its the price of that card, and it's around 14.6 million. So you can imagine how expensive it is, but I think this replay. Oh, in fact, it's a Wow. goal. It's a goal. I felt from a different angle we got to see that, and Yeah. suddenly Arvind is back on R9, scoring his brace, and what a beautiful one! Taking complete control over the game. Look at this beautiful, L2 and fake, just going in heel to heel over there, and makes that count. And wow, simple skill moves, making it really effective and converting it. या बट एक बार फिर से मौका बनते हुए माल्डीनी मौजूद थे, तो वो इतना इजीली नहीं छोड़ने वाले। से पास एंड इसी के बारे में कर रहे थे बात, रोनाल्डिनियो इंडिविजुअल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वैन डे सार द सेवियर, बहुत शानदार शॉट था रोनाल्डिनियो की तरफ से, फिनिश करने की कोशिश था, लेकिन वैन डे सार उनका जो है वो इस कार्ड के ऊपर, स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं टीम ऑफ द ईयर आइकन कार्ड पे, उनका जो जंप है उसको भी इंक्रीज किया गया है। यूजुअली जो प्राइम कार्ड है उनका, उस पे उनका जंप उतना खास नहीं है, जिसकी वजह से ग्राउंडेड शॉट्स या फिर उनको बहुत जल्दी अगर रिफ्लेक्स दिखाने की जरूरत पड़ जाए तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो कर सकते हैं क्योंकि ये टीम ऑफ द ईयर आइकन कार्ड है, 95 रेटिंग है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसका प्रॉपर फायदा इधर मिलता हुआ दिखा। बट एज ऑफ नाउ वंस अगेन रोनाल्डिनियो के साथ साइड को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फ्रॉम जमशेदपुर एफसी, एंड अरविंद देखिए कितना ज्यादा फोकस्ड है। मुझे तो लगता है कि वी शर्मा जिस तरीके का स्टार्ट दिया था जमशेदपुर एफसी को, शायद जो फिनिशिंग है वो जमशेदपुर उसी स्टाइल पे करना चाहते हैं। Oh, I think this is such a Ooh. nice start for Jamshedpur FC, like you said, right? Arvind looks so calm, so composed. He's making all those right passes, and in that final third, making those small little skill moves and ensuring, this is just the previous one. The way he used that L2 heel to heel made it count, and this could be another potential chance, but fended off, dealt with, and now this is a beautiful, beautiful driven through pass, but could not connect. And as a result, we enter into that half time, and Jamshedpur FC do have that lead. But still, it's not going to matter at all, at least at this point where we stand right now, because no matter, even if Jamshedpur FC just win this one 10-0, still won't change the result of the game. What a start! स्पेशली जमशेदपुर एफसी एंड अरविंद, वो यही सोच रहे होंगे जो कि मैंने इसके पहले भी कहा कि मुझे क्यों मौका नहीं मिला शुरुआत पे, लेकिन इट्स टू लेट। बट आई थिंक ये मैच अगर वो इस तरीके से जीत के जा सकते हैं, सो उनका ओवरऑल टीम का जो मोरल है वो थोड़ा बूस्ट हो सकता है। एंड स्पेशली देखिए अगर बात किया जाए
तो उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि कूल डाउन होके हैप्पीली खेलना चाहिए, या फिर हैप्पीली अगर आप नहीं भी खेल रहे हो, विदाउट इमोशंस खेलिए। इमोशंस जब भी आता है गेम के अंदर तो आप बहुत कुछ ओवरथिंक करने लगते हो, जिसके वजह से आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। मे बी आपको जो अपॉर्चुनिटीज है बीच में से वो नहीं मिलता, बट रोनाल्डो एक बार फिर से बॉल छीनते हुए पेले ऑलरेडी रन निकाल चुके थे, क्या वो पेले को पास देंगे? यस, पेले के पास बॉल, लेकिन रोनाल्डो राइट साइड से एंट्री लिए एंड ये अभी हो चुका है 3-0। रोनाल्डो विद सांबा। इसके पहले तो वो काम कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत डांस तो बनता है। Oh my goodness! Now this is starting to be looking really horrific for Adizima. His defense is completely in tatters. One thing we are witnessing a lot is that Arvind has been utilizing his wingers a lot, right? They're just getting in through that left wing and then a cutback, keeping things as much simple as possible. And there you have Ronaldinho for FC Goa, or rather for Adizima. Looked really promising, but eventually was well defended. And again, another chance to step over into a ball roll. But Virgil van Dijk and the Team of the Year card. How do you beat it? Well, Hadi Zima wanted to just push through, but the goalkeeper being really agile, making sure that he did not lose the ball like Alisson Becker in that Real Madrid matchup. For a Liverpool fan, that was quite horrific to witness. But we'll get over that and come back into the eISL, where after 55 minutes gone, it is still a 3-0 scoreline. या बट हाउ क्योंकि बीच में एक मौका ऐसा मिला था जिधर से गोल हो सकता था, बट लकी थे। बट लेट्स सी अभी क्या होता है। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी मौजूद इधर हकीमी, एंड उनके पास बॉल था, थ्रो इन होता हुआ बेलिंगम टू रोनाल्डो, बीच में मौका, लेकिन वर्जिल वैन डाइक वंस अगेन। उनका वो एक टच, आई थिंक वही काफी होता है कोई भी अटैकर से बॉल छीनने के लिए, एंड वही चीज दिखा। बट जमशेदपुर एफसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अरविंद इस बार, एंड आदिजिमा के लिए मुश्किलें क्रिएट होता हुआ। ऐसे शॉट से आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वैंडे सार को आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, उनको जम करने की भी जरूरत नहीं पड़ रहा। सो ऑब्वियसली वो आपके बॉल को रोक देंगे, एंड वही चीज हुआ। थियो हर्नांडेस के लिए पास था, एंड बॉल अभी आगे निकल चुका है रोनाल्डो के पास, एंड विथ रोनाल्डो टू पेले, क्या ये गोल होगा? एंड रोनाल्डो फिनिश करते हुए एक बार फिर से सांबा होता हुआ दिखेगा, एंड जमशेदपुर एफसी पहले मैच का रिवेंज लेते हुए 4-1 था, 4-0 ऑलरेडी हो चुका है। क्या और भी गोल्स है इस मैच के अंदर? बट आई थिंक यस, और भी गोल्स है। Apologies to the viewers. In fact, did miss out on that goal over there, and still trying to just get through the technical difficulties. And oh, this is looking to be a nightmare as he scores one more. Arvind is just cruising past, and Adi Zima left absolutely stunned, and could possibly be one of the highest goal scoring matches so far. 5-0, and I think last we had witnessed 5 goals being scored was, I guess, by Vicky, and that the circumstances were quite different against Bhagya. If you remember, that was such a soft penalty, and it was a red card for Virgil van Dijk, after which Bhagya, it was such a nightmare for him. But this time, even despite Adizima having all his players intact, I think nothing really seems to work for him. Arvind has taken complete control over the game, and this is one of those days, right, where no matter whatever you try, things just don't work out for you. And at least it has come in a good time for FC Goa, because they've managed to win the matchup. And like I said, no matter how many goals Arvind scores from over here, that is not gonna make any difference at all to the overall point standing, because FC Goa have won their first few initial games. This time also, trying to create those opportunities, trying to create those chances, but a little too short FC Goa. But now again on the counter attack, Jamshedpur FC looking ever so strong. A beautiful cross coming in. This time, however, well read. But as of now, Erling Haaland. Oh, chip finally, first goal.
मिलता हुआ एफसी गोवा को, बट ये कुछ ज्यादा ही लेट हो गया आते आते, क्योंकि वो इतने सारे लाइक ऑलरेडी 5 गोल्स कंसीड कर चुके थे। बट ये गलतियां इनके लिए भारी पड़ सकते हैं। बाय द वे वो बैक पास था, लेकिन कभी कभार बैक पास देने के चलते भी बॉल छीन जाता है आपसे, तो वो चीज अभी थोड़ा लकी थे कि बॉल नहीं गया। बट बेलिंगम से मबाप्पे राइट से ऑलरेडी निकल चुके थे रन। एंड इस बार देखिए आप, एरियल बॉल जो है वो ज्यादा खेला जा रहा है एफसी गोवा के आधी सीमा की तरह से। ये चीज हम लोगों को प्रीवियस डे पे भी दिखा था, प्रीवियस वीक पे, लेकिन वो तब 0-0 पे थे आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। लेकिन इस बार जो सिचुएशन, जो स्कोर लाइन है वो बन चुका है 5-1, जो कि उनके हित पे नहीं है। सो अभी जितने भी वो बॉल्स खेले उतना फायदा तो उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड जस्ट 13 मिनट्स टू गो, ये मैच खत्म होने के लिए सिर्फ 13 मिनट्स बाकी हैं। और उसी के बीच में थोड़ा बहुत लॉन्ग रेंजर शॉट्स भी ट्राई कर सकते थे। हालांकि उनका कोशिश था कि वो 1-2 करके डिफेंस को भेदे, बट उतना इजी नहीं होगा। अरविंद आज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म करते हुए साइड चेंज किया गया, एंड हकीमी टू बेलिंगम। हकीमी इधर अटैक पे ज्वाइन करने की कोशिश था, बट आई थिंक थोड़ा सा भी देख के खेल रहे, क्योंकि फॉर्मेशन अगर बिगड़ गया फिर काउंटर भी आ सकता है। Anything can possibly happen, and Hmm. but at this point it's just about, I think Adizima has woken up a little bit, and now he's showing those you know tendencies where he wants to score the goal, but like we said, it's a little too late. And with Haaland, just wanted to go with that step over skill shown, and we know how strong it is, and all these crosses coming through. The tall players are right ahead and could receive it, maybe have multiple options, could go for a volley, could go for a header, and even that team of the year Welshman Haaland card is also really good, especially his finishing. Every shot he takes is probably a goal, just a powerhouse of a card. And now, this is a very good chance, but again, you can clearly see that FC Goa, they've been humbled over here, right? The way they've been showing those impatient plays, because I think what Adizima, or rather his real caliber is, he is a calm and composed player, but suddenly when you are 5-1 down, you kind of tend to lose sight of the bigger picture, as a result of which he's not been able to convert a lot of those chances. And that being said, we finally reached a full time where Arvind did manage at least to walk off with his head held high, especially after that defeat. Still winning his individual game will bolster up his confidence for the next few matches to come. But as it stands, FC Goa still have managed to win this tie, still taken all the points, that is 3 to their name. या एंड जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज अभी के लिए तो एफसी गोवा को मिल चुका है, जो कि है 3 पॉइंट्स ओवरऑल स्टैंडिंग के ऊपर। बट ये थे कुछ गोल्स जो कि हम लोगों को दिखा था अरविंद की तरफ से शुरुआती में, जिस तरीके से वो गोल स्कोर कर रहे थे। एंड स्पेशली जो ये गोल था, प्रॉपर बहुत शानदार एंगल से भी हम लोगों को दिखा, लेफ्ट साइड पे फुल्ली स्ट्रेच्ड वैंडेसार को भी बीट करता हुआ बॉल चला गया था नेट पे। सो बहुत शानदार था वो गोल। एंड इसके बीच में पेले से रोनाल्डिनियो दिखा था, एंड ब्राजीलियन ब्रिलियंस हम लोग को इधर नजर आया था। ओवरऑल ये गेम बहुत अच्छा था अगर हम लोग बात करते हैं जमशेदपुर की तरफ से, लेकिन ये जो पूरा मैचअप था वो उतना कुछ खास उनके लिए गया नहीं। बट वो होता है ना कि जाते जाते आपको कहते हैं कि नहीं ठीक है, आपको कुछ नहीं जब मिला तो आप यही लेके जाओ, तो कुछ उस तरीके का सिचुएशन था। लेकिन जो पॉइंट्स है वो नहीं मिला, जिसका बाद में भुगतना पड़ सकता है जमशेदपुर एफसी को, क्योंकि उनके पास अभी पॉइंट्स नहीं है। ओवरऑल मैचअप पे इधर हम लोग एफसी गोवा आगे बढ़ते हुए देखेंगे। हालांकि जमशेदपुर एफसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे पिछले वीक पे भी, एंड इस वीक के इस गेम के भी शुरुआत में को-ऑफ की अगर बात किया जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद जब सेकंड हाफ चालू हुआ उस टाइम पे वी शर्मा एंड आदिजीमा का स्टैट मानो कि चेंज हो गया। एंड विद बेकम हम लोग जो यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग पासेस निकालेंगे, लेकिन वो लॉन्ग पासेस नहीं निकाल रहे थे, राइट साइड पे लेके गए, थोड़ा विद बना रहे थे। एंड बहुत जल्दी जब वो हो नहीं रहा था, काम नहीं आया, तब उन्होंने मेसी को इंट्रोड्यूस किया। मेसी आया एंड मेसी आके जस्ट वंडर करके गए, एंड वही एक गोल हम लोगों को इधर देखने के लिए मिला था। तो ओवरऑल जो गेम था वो काफी अच्छा हम लोग को जाता हुआ देखने के लिए मिला।
Of course, and now it's time for the MVP, as we have to take a quick look at who might that be. Is it going to be Arvind? Yes, indeed. Despite losing the matchup, winning his individual game by 5 goals so far, the highest so far in the eISL season 2 has been tied up with ATK Mohan Bagan. We've seen Vicky also doing the same. So Arvind off to a really good start in the second week and has managed to win at least his individual battle, if not this entire matchup. Very well, composed play by shown by Arvind, especially in those final thirds. TT, we've seen that he's not been shying away, and especially when you talk about the nuances, when you go on to use skill moves like heel to heel, you're always supposed to use it from an inclined angle, and he did exactly that. He could have gone for maybe step overs, he could have gone for a lot of skill moves, but he did not do so, and he knew exactly what he wanted to do. But that being said, ladies and gentlemen, we are finally done with this first fixture. FC Goa walk off with 3 points, and now what we're going to do is head for a short little break, because right after we will be back with the second matchup for the evening.